Hello everyone, welcome to the part three of Meet One. And basically, in part one and part two, we discussed about the Ragul and Deepak, what they have initialized means like among themselves and what they have prepared. Like basically, Ragul have showed like how we can manage our finances with those that particular AI model, and Deepak have showed means like how farmers, how we can help the farmers for basically uh, predicting his diseases or just telling him what's the current prices in mandi and all these stuffs, right? So we will move on to Aditi. So Aditi, you can share your screen and you can just make us walk through that what you have done till now. Sure. Okay. So the idea that I chose was receipt management for Google Wallet, right? So basically, what exactly my project is, I'll tell you. So basically, what it is, see, we all know that we all spend money daily, right? In many things, like we do online orders, we do buy some clothes, or order some food, or buy some grocery items, right? So we all do all these things in our daily life. But do you really think that you keep your bills with you? Like, for example, you did some grocery shopping, but after that you kept that bill with yourself, right? And you thought ki okay, I'll use it to write my monthly budget or whatever. But after some times you will only forget ki where you have kept your bill, and maybe you have missed something, or due to something that bill has destroyed, right? So we all never we basically we are not capable enough, not exactly capable, but you can say that in this time, like in this world, the people have become so lazy that they are not able to keep track of their money. And not exactly, yes, money, and like the expenditure that they are doing. Everyone should control their expenses, right? They should track their expenses. So basically this project will help you to do that. See, what problem it will solve is, first problem is people don't track their small daily expenses. The second one is paper receipt, that, for example, you got that paper receipt could be lost, or you can say maybe by mistake you ignored it. And also, like, for each month you don't know how much you are spending. And also, due to which you don't know your smart planning. Basically, you miss out on smart planning or cooking or saving ideas. So first I'll uh, walk you through the problem statement. See, this app should basically cover these 4 points. First point is multimodal receipt ingestion and analysis. Means whatever photos or videos you or live stream, whatever you insert, the app should able to understand it. The second is local language query and past generation. So, for example, you don't know English, okay, and you know Hindi. So, or whatever local language. So, when you give your input on your local language, then this app should able to give you answers on that local language itself. Spending analysis and saving suggestions means this will help you. Like, for example, you asked ki, how much did I spend in my last month for groceries, or how much did I spend, what was my expenditure in last month. So all these answers would be given by this app by checking. Even it will give you graphs
so that you can analyze or you can easily understand your expenses or expenditures. Now, the last one is seamless Google Wallet API integration, means that it will basically be attached to your API Google Wallet, so that you'll be able to basically you'll get a budget warning alert. Means, for example, okay, so basically your spending report summary of your whatever. Means basically this will uh, this will create all the requests. Means uh, okay, let me give you an example. Let me think of an example so that I can explain you. So, okay, I'll tell you. So, what exactly it will do is, um, okay, for example, if you spend, suppose your monthly budget is 5,000 a month, okay, and you spend some amount on groceries and some amount on food and some amount on something else. So your total expenditure was 4,700 for the month. Now you're still left with 300, right? So what it will do, that it will give you an alert and will uh, it will send that money to basically to your Google Wallet. Basically, it will suggest you to since this time you have saved 300 rupees, so you can add it to your wallet. Now, I'll show you I'll show you the total of workflow of my app. Just 1 second. Okay, so now, when a person logins into that app, so what it will do? So first, it will ask you to choose your preferred language. Okay, so that it can set that language, and then it will ask your religion. Why religion? Yeah, I know you would be confused. Why religion? So, suppose you are a Hindu or Muslim or Christian. So, every religion has some festivals, right? These are my additions that I did with my app. So, you all suppose, yes. So, every religion have their festivals, right? So, this will automatically detect the festivals. For example, if you say that I'm a Hindu, so it will detect all the festivals of Hindu on that particular year. And after that, what it will ask you is number of family members that you have. Then what it will ask, that please insert the birth date of all your family members. Means basically, see, if you are a mother or you are a father, you'll obviously only insert the data of your children's or your spouse or your parents. That's it. Only 5 to 6 members. So anyone can do that. Apart from that, it will ask you to set a monthly budget. Now, the next one is it will ask you to give extra budget limit for festivals as well as birthdays. Different budget for first festival and different budget for birthdays. Now, it will take access, means it will take your, क्या बोलते हो उसे, it will take your request नहीं.
बेसिकली वो आपसे पूछ लेगा कि डू यू वांट टू गिव योर वॉइस इनपुट एज वेल एज आउटपुट। तो व्हेन यूल सिलेक्ट यस, उसके बाद फिर आप गूगल या वट एवर से आप लॉग इन कर लो। ठीक है। नाउ व्हाट यूल डू। अब सपोज यू बाई, you have done some grocery shopping or whatever shopping. Oh yes, I'll tell you one more thing. It will also ask you whether you have a maid or not. It will ask you that as well. Even for milkman, it will ask. So after that, what it will do, whenever you'll do shopping, just upload the photo of your photo or video, whatever required. Even you can insert the PDF of the receipt. Now, what it will do, basically, we'll use computer vision, or you can say yes, ANN, CNN, everything to what? Yes, to extract the text out of that image. Avinash, you are muted. After that, what, even hand printed bills can also be matlab, recognized. So you are also allowed. So you can insert that as well. Uske baad, the next step here would be, now what exactly our app will do. Whenever you'll insert some bill, this will create database. Okay, and it will basically categorize the database on the basis of your shopping. For example, grocery, it will the main category would be grocery, food delivery, clothing, personal care, electronics, home services, others. So in this way, it has categorized your things. Why? Why do we need to categorize? Because when you'll ask ki, for example, at the end of the month, I'm asking ki how much I have spent for my grocery. So you can, means basically our app can give that reply as well. This is the reason we are categorizing this database. After that, monthly and historical expense tracking would be done. Yes, even monthly expenses you can ask, or you can say, or last month expenses, or last 2 months expenses, or whatever you can ask. Even hmm. And your expenses would be displayed on the through charts, bar charts, pie charts, whatever. Now, let's move on to the next part, which is budget tracking and smart notification. This is something very important. You know why? Because suppose a person, his budget is 5,000 and he has spent 80% of his money, like money from his budget. So he'll get a notification कि भाई you have already spent 80% of your budget. So please take care because still this month is not ended. Now, suppose the person has still done, like he has used his 100% budget. So he'll get a red alert that yes, you have used your total money. So please take care and don't use it. Now, if the person has used less than 60% or basically less than 60 or 70% uh, for that entire month, okay, and he's able to save money from that budget money, so he'll get appreciation. Now, suppose I said that it will ask you ki when is your birthday. It means it took input for your family member's birthday as well as it asked you for your religion. So now, suppose since you are Hindu, so I can say that it's the festival of Diwali is in November, and suppose it is a November month. It is the month of November. So now what it will do is it will automatically fetch from Google Calendar and from basically web, that yes, Diwali is in that month. So automatically it will add the extra budget to that particular month, for that particular month. That and suppose, okay, and suppose your family member's birthday is also on November, then it will add that budget as well to the
टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ दैट मंथ, कि मतलब टोटल बजट ऑफ दैट मंथ में इट विल ऐड दैट एज वेल. आफ्टर दैट सपोज दिवाली इज ऑन 24th नवंबर, एंड 24th नवंबर को किसी फैमिली मेंबर का बर्थडे इज देयर. then then what it will do कि maximum of maximum it will take maximum, मतलब कंपेयर करेगा the extra budget decided for birthdays and extra budget decided for फेस्टिवल. उन दोनों में जो बजट मैक्सिमम होगा, फॉर एग्जांपल आपने सेट किया कि बर्थडेज के लिए आई से कि एक्स्ट्रा में आई स्पेंड 2000, एंड फेस्टिवल के लिए आपने सेट किया था 4000. सो व्हाट इट विल डू, मैक्सिमम ऑफ 4000 एंड 2000 इज 4000. तो उस मंथ में इट विल ऐड 4000 टू, हाँ 4000 टू द बजट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ स्मार्ट फीडबैक. ठीक है, अब आपको वो खुद सजेशन देगा. देन एट द एंड ऑफ द मंथ इट विल गिव यू सजेशंस. फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 टब्स ऑफ आइसक्रीम यू ऑर्डर्ड लास्ट मंथ, तो इट विल गिव यू सजेशंस कि यू हैव स्पेंडेड यू हैव वेस्टेड योर मनी ऑन 10 टब्स ऑफ आइसक्रीम. Ice cream is not good for health. You can cut down sugar, and spending money on this cannot be a good investment. Instead, you can use save that money, or you can buy a fruit. So it will give you that type of feedback and suggestions as well. उसके बाद द नेक्स्ट वन इज वॉइस इनपुट प्लस मल्टीलिंगुअल सपोर्ट. तो अगर इफ यू आर आस्किंग समथिंग इन हिंदी, मतलब थ्रू वॉइस टेक्स्ट, कि नहीं वॉइस, कि मुझे अपने इस महीने का खर्चा बताओ, तो इट विल गिव यू आंसर इन हिंदी ओनली. एंड इट्स नॉट लाइक कि इट विल गिव अ टेक्स्ट आंसर. वो बोल के आपको बताएगा. अगर आप बोल के जवाब क्वेश्चन दे रहे हो तो वो बोल के जवाब देगा. नाउ द गूगल वॉलेट इंटीग्रेशन. अब ये क्या है, तो बेसिकली आपका मंथली स्पेंड रिपोर्ट बनाएगा. इट विल टेल यू रिसिप्ट समरी, स्मार्ट सजेशन एंड ग्रोसरी टू ग्रोसरी और टू बाय लिस्ट. इवन इंटरैक्टिव फीचर्स भी रहेंगे, जैसे पुश अलर्ट, reclickable history logs and links to chart assistant from passes. Now for example, I already said during onboarding के टाइम पे ही will ask कि do you pay money to your maid, gardener if you have, or watchman. Basically I'll first it will ask, do you have a maid? If yes, then how much money do you give to her each month? Then the next would be, do you have gardener or do you have watchman? And accordingly it will track all your expenses. Now this तो I already explained you कि how it will, what it will do for festivals and birthdays, right? So this is exactly what the workflow of this app would be. And these are some of the tools, जैसे multi-modal receipt parsing. For that, we'll use Gemini API on Vertex AI. This I've used ChatGPT because I was not very much aware of all the tools and libraries. For OCR, obviously Google Cloud Vision API. Then data extraction and reasoning to Gemini prompt engineering. You can go through this. I don't think so. I have to read all these. As discussed, we have to use Firebase only to get good points, as well as we have to use Google products so that we can gain extra points. And like this was the developer roadmap that I was creating, but I need to edit it more because I guess there are something missing here. So I'll do that. That's it from my side. So, do you have any questions? One suggestion means like whether going for that means like you have asked its the reason, right? You can ask its reason means like being in a south means like being in a Tamil Nadu, you are in Tamil Nadu, and if you are Hindu, so that doesn't mean that you will
celebrate Diwali, right? Because they have Hmm. their festivals. If I'm in Maharashtra, right? So several festivals are there. Deepak can correlate it with that. Okay. So the festivals changes when we change the states. Hmm. When we discuss about east side of the India, whether it's West Bengal, whether it's some northeast, so they have different festivals there, right? Hmm. So for each state, different festivals are there, and all of them combine as Hindu. It's like if we determine that this person is a Hindu, so overall festival for Hindus we can consider is that we can call it whether it will be Diwali, Holi, these two Hmm. things, right? And if we talk about, you can say like Ganesh Chaturthi. So Ganesh Chaturthi is celebrated all over India, but again, it's somewhere around regional thing. If you talk about Navratri, right? Navratri or Durga Puja, right? So it's again a regional festival, but it's celebrated all over India. But if we compare that, it's the most part of Navratri is being celebrated in Gujarat and West Bengal and the areas which is beside West Bengal and most parts of Gujarat, right? Hmm. But that doesn't mean that everyone means like living in India that doesn't celebrate it. No, but it's like what you can correlate with that the holidays, the expenses. People living in Gujarat and people living in Kolkata or West Bengal area. Okay, the expenses they will expense more rather than people living, you can tell uh, in Delhi or Kashmir or Punjab, or you can come Hmm. to the west side, like you can talk about Hmm. Goa. Okay, so that doesn't mean they doesn't celebrate it. No, they celebrate it, but they doesn't celebrate like a big. तो इसीलिए इसीलिए ना द दैट फेस्टिवल बजट इज देयर जो उन्होंने सेट किया है. तो उसके लिए रीजन अगर रिलीजन की जगह अगर रीजन रहेगा तो इट विल बी क्वाइट, मतलब थोड़ा रीजन प्लस रिलीजन. रीजन प्लस रिलीजन, हाँ यू कैन डू इट, बट लेकिन अ, बट अगर महाराष्ट्र में मुस्लिम है और उसे मैं हिंदू वाले, क्योंकि सी एवरी मंथ वी कैन नॉट आस्क कि आप ये सेलिब्रेट करते हो, आप ये सेलिब्रेट करते हो. नहीं और नहीं, वी शुड ऑब्वियस, आस्क. मुझे वो फीजिबल नहीं रहेगा, मुझे लगा कि हर महीने डू वी आस्क. नहीं वो कैलेंडर मतलब. में अपने आप वो आ जाता है, ठीक है? हम्म. इफ यू आर फॉलोइंग, मतलब लाइक महाराष्ट्र का कैलेंडर, इफ यू आर फॉलोइंग इट, तो उसमें ऑटोमेटिकली देर इज, वो कैलेंडर में है हम्म. ठीक कि है. आज इस दिन पे इस फेस्टिवल है, हाँ वो ठीक है? पता है मुझे. एंड वी सेलिब्रेट दिस, तो ऐसा है। हम्म. आई एम टॉकिंग अबाउट बिग मीन्स लाइक थोड़े थोड़े स्मॉल, like for example you can say Janmashtami is there, right? So again Janmashtami is being celebrated all over North India and including Maharashtra as well, right? But if you'll go in South, they doesn't celebrate it much. हाँ तो रीजन वाइज रख सकते हैं इंस्टेड ऑफ रिलीजन. नहीं, रीजन प्लस रिलीजन. ठीक है, तो वो रखते हैं. But I think if someone is a Muslim, तो उसके लिए सब चीजें एक रहेगी, मीन्स लाइक आई एम नॉट bit confident on that, but yes, तो इसलिए रिलीजन प्लस वो रखते हैं. क्या? रीजन प्लस रिलीजन रखते हैं, बिकॉज फॉर हिंदुइज्म ये डिफरेंट है. बट मुस्लिम्स के लिए दो डिफरेंट नहीं है स्टिल. वी हैव टू थिंक. एंड मुस्लिम्स के लिए वी हैव टू थिंक फॉर ईद ना. ईद तो उनका फिक्स्ड ही नहीं होता. नहीं, we don't know about that क्या है उनका, but again हाँ ठीक है, मीन्स वो लाइक, रहने दो, वो रहने दो, वो तो हम थोड़ी बोले एग्जैक्टली इसी दिन. बट मन तो वही रहता है. ठीक है, समझ गई. तो रीजन एंड रिलीजन विल बी द सेम, मतलब ये रहेगा, ठीक? क्योंकि लाइक कोई बंदा, इट डजेंट मीन कि लाइक वी आर बिल्डिंग द ऐप, तो भाई वो बंदा बिहार का है तो वो बंदा यूज कर रहा है ऐप, या फिर वो हैदराबाद में रहता है तो यूज कर रहा है, या फिर वो कश्मीर में रहता है तो यूज कर रहा है, ठीक है? तो अब ऐसा नहीं है ना कि वी आर बिल्डिंग द ऐप फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट, राइट? वी आर समझ बिल्डिंग गई फॉर मैं. ऑल ओवर इंडिया। यस, यू आर करेक्ट.
आई गॉट योर पॉइंट, आई गॉट योर पॉइंट। तो ये था, ये मेरी तरफ से था। एंड दीपक, डू यू हैव एनीथिंग टू ऐड? आवाज आ रही है? लाइक, हाँ हाँ, नो आ रही इट्स, है। यस यस। ओके, सो whatever the agent you are try to creating, don't you think that the agent like थोड़ा क्लमजी हो रहा है या फिर थोड़ा ज्यादा हो रहा है? लाइक ये हम बहुत ज्यादा इनपुट्स ले रहे हैं यूजर से, यूजर का जो इंटरेक्टिवनेस है वो कम हो जाएगा, बिकॉज एक ही बार ले रहे हैं ना, जब लॉग इन करते हो दैट इज तो फाइन फॉर वो दैट, बट कि जैसे सपोज हम देख रहे हैं कि आज के इसमें हम रील्स की देखते हैं, विद 2 to 5 सेकंड से हम बोर हो जाते हैं, हमें रील्स पसंद नहीं आती तो हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। वो हम देखते भी, हम कभी टर्म्स एंड कंडीशन हम कभी पढ़ते भी नहीं है, लाइक हम वो अलाउ कर देते हैं देन गो टू नेक्स्ट हो जाते हैं। तो वो मुझे बट लग रहा है। जब तुम्हें हाँ, हम्म बाकी वो जो स्किप करने का भी ऑप्शन रहेगा, बट उनके लिए फिर मतलब ऐसा रहेगा कि इनपुट कीजिए या स्किप कर दीजिए। तो इफ दे आर स्किपिंग, तो फिर उनके लिए फिर ऑटोमेटिकली बर्थडे जनरेट नहीं होगा। व्हेन दे गेट टाइम तो वो बर्थडे जनरेट करेंगे, देन ओनली वो ऐड होगा। सी और योर जो करेक्ट, प्रॉब्लम बट ये स्टेटमेंट मैंडेटरी इनपुट्स है ना। एंड जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है दैट इज मैनेजमेंट ऑफ रिसिप्ट, है ना, वॉट एवर वी आर जनरेटिंग और वॉट एवर स्पेंडिंग ऑफ। हाँ, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। नहीं, सही में ये मेरे को ऐसा भी है सुनाई नहीं कि दिया कुछ। अरे यार ये मेरा माइक खराब है क्या? दूसरा आ गया तुमको? अभी आ रहा हाँ, पहले से बेटर है? है अभी बस। क्लियर है? हाँ, ठीक। तो माइक मुझे पास में रखना पड़ेगा। ओके, सो कैसा है, मेरा ये बोलना था कि हमें रिसोर्स मैनेजमेंट का बनाना है गूगल वॉलेट के लिए। सो एग्जैक्टली व्हाट कर कि हमें रिसिप्ट जो भी है ना, हमें मैनेज करना पड़ता है मैनुअली। सो वी आर लाइक डिजिटाइजिंग इट, है ना, दैट्स इट। बाकी जो है वो हमारा एआई ट्रेन होगा, लाइक कुछ भी है वो हमें जैसे हमारे एक्सपेंसेस ट्रैक करके हमें इंसाइट्स देगा, देन ही विल फाइंड द अपॉर्चुनिटी टू सेव द मनी, हम्म है ना। वो रीजन रिलीजन वो कहाँ मैटर करेगा वहाँ? और मुझे फ्यूचर के नहीं बताना है ना, लेकिन मुझे फ्यूचर में ये करना है पता। दैट इज ये जो लास्ट वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, दैट इज एक्सप्लेन नहीं बाय द समझ में आया। रघुन। अविनाश, अगर आपको समझ में आया तो कुड यू प्लीज रिपीट? मुझे नहीं समझ में आ रही है बस। ही इज ट्राइंग टू टेल, मतलब वो बेसिकली ये बोल रहा कि जैसे ये हमारा ऐप फ्यूचर तो प्रेडिक्ट करेगा नहीं ना, तो फिर ये नहीं। रिलीजन एंड रीजन मैटर नहीं करता है उसमें। अभी हाँ क्लियर है क्या वॉइस? हाँ, क्लियर है, क्लियर है। हाँ, आप सही बोल रहे हो कि वो फ्यूचर डिटेक्ट नहीं करेगा, बट बेसिकली आपके मंथली एक्सपेंसेस भी तो नहीं बढ़ने देगा। बेसिकली यहाँ पे करना क्या है हमें, आपका मंथली एक्सपेंसेस को ट्रैक करना है, एज वेल एज जहाँ रिक्वायर्ड है वो सजेशन दे सही, ताकि वी कैन डू इवन वो ये तक बता पाए कि व्हाट एग्जैक्टली इज लेफ्ट, और मतलब जो भी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि फ्यूचर ये प्रेडिक्ट नहीं कर रहा है, बट आपको फ्यूचर में मनी सेव करने की टिप्स तो दे रहा है ना। अब हाँ फॉर वो एग्जाम्पल है। मैं बता रही हूँ, नेक्स्ट मंथ आपके घर पे किसी का बर्थडे है, एंड बर्थडे पे आप पार्टी दे रहे हो। एंड यस, वन मोर थिंग, हर बर्थडे के 5 दिन पहले देयर वुड बी अ नोटिफिकेशन जिसमें इट विल आस्क कि 5 दिन बाद बर्थडे है इनका, डू यू वांट टू सेलिब्रेट, मतलब कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करना है या नहीं। एंड अकॉर्डिंगली वो बजट ऐड करेगा। ठीक है, आप समझो आपने 2,000 रुपए, तो ऑब्वियसली अगर पार्टी है तो 2,000 रुपीज आप मिनिमम चल लेके चलो, तो आपने वो बजट यूज किया। अब इसके अकॉर्डिंग अब आपका एनालिसिस गलत हो जाएगा ना। बर्थडे अगर आपको पता ही नहीं है कि वो बर्थडे है, इसीलिए आपका इस महीने एक्स्ट्रा एक्सपेंड हुआ है, तो फिर वो क्या करेगा आपको उस वे से फिर वो गलत बताने लगेगा। और मैं बताती हूँ ये ऐप में मैंने ये क्यों किया है। ठीक है,
अगर आप समझो कि 2 महीने से आप 10 केजी चावल खरीद रहे थे, तीसरे महीने चौथे महीने 2 महीने बैक टू बैक किसी किसी का बर्थडे हो गया, तो आपने 10 की जगह 15 केजी खरीदने लगे, आप 15 केजी खरीदने लगे। अब आपके पास 4 मंथ का डेटा है जिसमें आप देख रहे हो कि 2 महीने 10 केजी खरीद रहा है, 2 महीने 15 केजी खरीद रहा है। तो आपका आप क्या बताएगा कि आप नेक्स्ट मंथ के लिए जब आप सजेशन लोगे कि मुझे क्या क्या लेना है मुझे याद दिलाओ, तो अगर वो आपको याद दिलाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सजेशंस एंड टिप्स भी दे रहा है, ठीक है, तो आप याद दिलाने बोला जाएगा तो ये क्या बोलेगा, 10 केजी चावल या 15 केजी चावल? या ये बोल देगा कि आप इसमें ज्यादा पैसे खर्चा कर रहे हो, 2 महीने आप कम खा रहे थे, 2 महीने आप आपने ज्यादा खा लिया। तो इसीलिए ये एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर उसको बताएगा कि क्यों ये खर्च हो रहा है। समझ रहे हो? ओके। ठीक है। इसीलिए ये मुझे है थोड़ा कि सा कंफ्यूजन यहाँ है, लाइक हाँ। जो लेट ए स्पीक टू योर मनी वाला है जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, एंड दिस वन इज, ये कंबाइन हो रहा है थोड़ा कुछ लेवल पे जाके, लाइक। हाँ, जब जब राहुल वॉज टेलिंग तो मुझे भी उस हाँ, टाइम पे थोड़ा कनेक्टिंग लग रहा था कि ये तो दोनों सेम सेम ही लग रहा है मुझे। इसलिए फिर मैंने स्टॉक्स एंड वो सब के बारे में पूछा था। बिकॉज अगेन जो रगुल का था उसमें भी वही हो रहा था कि लाइक कि हम हमारे एक्सपेंसेस या फिर हमारा जो है सेविंग्स है कि उसके ऊपर बेस से हम। मैं बताती हूँ। हाँ। बेसिकली वो जो इन्वेस्टमेंट के लिए था, और ये आपका इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। ये बेसिकली किन लोगों के लिए है? जैसे कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, ठीक है, और वो घर से बाहर रह रहा है, तो अब उसका काम क्या है? अब वो क्या है, वो अपना मंथली एक्सपेंडिचर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसे कभी भी बाहर से खाना होता है, वो कभी भी बाहर से खा लेगा, उसको कुछ फिक्स तो है नहीं। ठीक है, मैं एग्जाम्पल में बता रही हूँ। तो उसके एक्सपेंडिचर को ये पहला मैनेज करेगा। सेकेंडली, वो जो हाउस होल्ड वुमेन्स होती हैं उनके लिए भी आई गेस ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले पीपल यूज टू कीप दैट, बट अभी मतलब उनसे ज्यादा मैं रिलेट ज्यादा उनके लिए कर सकती हूँ जो बाहर रह रहे हैं एंड जॉब कर रहे हैं, बिकॉज दे आर न्यू। उन्हें इन्वेस्टमेंट की जरूरत तो है, बट इन्वेस्टमेंट के लिए उन्हें पहले मैनेजमेंट की जरूरत है। जब मैनेजमेंट ही नहीं है तो इन्वेस्ट क्या करेंगे? क्योंकि वो बचा ही नहीं पा रहे हैं ना, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि खर्च कहाँ हो रहा है। तो देखते हैं, थोड़ा बोल भाई कंफ्यूजिंग देख। लेवल है। हाँ। थोड़ा है, थोड़ा तो है। मैं शुरू शुरू में मुझे भी लगा था। नहीं तो कंफ्यूजिंग मुझे है तो भाई एक था मतलब। जैसे, आ, मैं कुछ बोलूँ, हाँ, जैसे हमारे पास लाइक मल्टीपल एप्स है ना, जो पेमेंट एप्स है, हाँ। गूगल है, तो फोन पे है, मल्टीपल हम्म है। अब वहां पे हम्म। जैसे बिजनेस अकाउंट्स होते हैं ना लोगों के, कि भैया हाँ। किसी का बिजनेस है, किसी का, और मल्टीपल बिजनेसेस जो है। अब जब हम्म। वो पेमेंट्स ऐप का जो यूज करते हैं ना, लाइक बिजनेस के लिए यूज करना है हमको पेमेंट्स ऐप, तो वो एक अलग उनका चले जाता है कि भैया आप इस कैटेगरी के अंडर बैठते हो, है ना। तो जैसे मैं यहाँ पे एक नॉर्मल पर्सन हूँ, मैं कोई शॉप में गया, है ना, उसका बिजनेस अकाउंट है, मैंने उसको पे किया अमाउंट कुछ, एक 30 रुपीज या ठीक है। 40 रुपीज, वॉट एवर इट इज, है ना। मैंने हाँ। पे किया। अब उसकी वजह से मुझे यहाँ मेरे इसमें भी आएगा भैया कि ये इसका जो बिजनेस अकाउंट है ये नेम से है। जैसे मैं मेस में जा रहा हूँ खाना खाने के लिए डेली, तो वहां पे उनका एक हम्म। आता है भोजनालय करके, लाइक कि वो कम अंडर द, कि भैया खाने किस में आएगा, उसके जो भी है फूड के अंडर में आएगा। तो वो कैटेगराइज्ड है ऑलरेडी, है ना, पेमेंट्स का जो है बिजनेस का। हम उनका हाँ। एपीआई यूज करके हमारा ऑटोमेशन वहां लगा नहीं सकते कि भैया मैं जहां पे कर रहा हूँ वो उस कैटेगरी के अंडर में स्पेंडिंग में चले जाए, है ना, सो दैट कि मुझे कैटेगराइज नहीं करना पड़ेगा खुद से। वो एक वे नहीं हो सकता है क्या, लाइक वो एक मेरा दिमाग में अभी आया अच्छा, है। मतलब वो जो आप डेटाबेस कैटेगराइजेशन वो ऑटोमेटिकली होगा, वो हमें कैटेगराइज थोड़ी करना है। वो तो बिल नहीं, वो देख। हमारे स्पेंडिंग की इनसाइट्स हमें वहां से दे सकता है ना, हाँ, तो वो भी एडिशनली होगा ना, वी कैन यूज मतलब इट। बेसिकली आप ये बोल रहे हो लेस कि देन अ हमने। मिनट। हाँ ठीक है, ठीक है, 2 मिनट क्या? लगेगा। तो चलो लेस देन अ रीजॉइन मिनट करते लेफ्ट। हैं एंड देन विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन। मुझे ये सुनना है।